Hello students, this is Hardik sir. Today we will be starting our second lesson, part 2 from History, Standard 8. The title of the lesson is From Trade to Territory, where the company establishes power. So with the part 1 we had paused from this particular paragraph wherein we found that the company was now supposed to enter the politics of the local rulers. Means for company it was very difficult to separate the trade from politics. Means it had to interfere with the politics of the local rulers in India. But why company had to do so, and even why the rulers, local rulers, also had to interfere with the trading? So there are number of events, number of battles which have taken place in the history. So let us first start with the East India Company. That trade is begin in Bengal. So how the first thing started? So let's have a look over that. So the first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651, and in Hooghly in 1651 they had first factory built up for the English factory. So now this was the base from where the company's traders, जिन्हें factors से जाना जाता था, so the company's traders who were known as factors by the time they operated. So that was the base which was established on the banks of river Hooghly in 1651. The factory had a warehouse. Now what was a factory about? So there were number of things included. पहला तो warehouse रहता था wherein they used to store the goods for exporting. So goods for exporting were stored in the warehouse. दूसरा रहता था वहाँ पे number of offices where the company के officials used to sit. So there was number 2. Second thing, offices where the officials sat. So as the trade expanded, धीरे धीरे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, the company persuaded it, they explained, they argued, they tried to convince them, यानी कि merchants और traders को convince किया गया to come and settle near the factory. So they also came and settled near the factories by 1696. The most important event now are supposed to start. So by 1696 it began building a fort around the settlement. सो ये सेटलमेंट्स के आसपास फोर्टिफिकेशन करना वगैरह अब शुरू हो चुका था. 2 years later, after 2 years, they bribed Mughal officials into giving the zamindari rights over 3 villages. Zamindari rights. Now they started entering the politics. So now they had zamindari rights of 3 villages. उनमें से एक था कलिकट, which later on grew into the city of Calcutta or Kolkata, which is known as today. So धीरे धीरे ही सही, but ultimately because of the bribe of Mughal given to Mughal officials, they got the ज़मींदारी rights over 3 villages. उनमें से एक था कलिकट, जो आगे चल के कलकत्ता और अभी के लिए कोलकाता से जाना जाता है. They even persuaded Mughal Emperor औरंगज़ेब को भी कन्विंस किया गया to issue a फरमान. And what is farman? First we will see a definition. Farman means a royal edict, a royal order. So that order nobody can deny it. So ऐसा एक order issue करने के लिए उन्हें भी convince किया गया to grant company the trade duty free. So now they could trade without any taxes. But just look carefully, the company only was given this right. No other personal traders were given this right. So the company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. जो ऑलरेडी उन्हें दिए गए थे ऐसे राइट्स और ऐसे कंफर्ट वगैरह, उनमें भी दे कंटिन्यूसली केप्ट ऑन मैनिपुलेटिंग, उसमें भी वो चेंजेस कराना चाहते थे. ऊपर से और कंसेशन तो उन्हें चाहिए ही था. सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर गिवन, यू कैन फाइंड औरंगज़ेब का जो फरमान था. फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी to trade duty free, only the company, but officials of the company, जो दूसरे official थे who were carrying on private trade, so they were not actually given the trade duty free. They were not supposed to trade without any taxes, but they were expected to pay duty, means they had to pay the taxes, but they refused to pay. उन्होंने मना कर दिया. राइट दिया गया था केवल कंपनी को, बट दी अदर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी जो उनका प्राइवेट ट्रेड करते थे, उन्होंने भी ये टैक्सेस पे करने से इनकार कर दिया. और उस वजह से रेवेन्यू जो बंगाल का था उसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बहुत बड़ा लॉस आया.
So how now the Nawab of Bengal, Murshid Quli Khan. So by the time Murshid Quli Khan was the Nawab of Bengal, अब ये क्यों प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? That is the question given to you. क्योंकि आप समझ सकते हैं that they had to bear a huge loss in taxes of Bengal, and that's why the Nawab of Bengal obviously would protest, because the right was given to only the company and not to all the traders of the company. So only company had the right to trade duty free, but not the others. So here one picture is also given. From this figure you can find the local boats which you can see somewhere here. So they are just bringing the goods from ships in Madras, that is now known as Chennai. So this picture is painted by William Simpson in 1867. So this is an important question. You might be asked about the painter. So look at the figure carefully and just keep in your mind. So we will continue now how trade led to battles. So यहाँ ऊपर हमने देखा that Murshid Quli Khan would obviously protest. But now later on what happened? So after the death of Aurangzeb, जब 1707 में औरंगज़ेब का डेथ हो गया, उसके बाद बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दिया. मीन्स नाउ दे वर दी ओनली रूलर्स ऑफ बंगाल. सो आफ्टर द डेथ अल्टीमेटली आफ्टर मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, और उस अलीवर्दी खान के बाद में सिराजुद्दौला हु बिकेम द नेक्स्ट नवाब्स ऑफ बंगाल. सो सिराजुद्दौला became the Nawab after अलीवर्दी खान. सिराजुद्दौला वॉज द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान. ये सब के सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे. ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. तो इन्होंने कंपनी के कंसेशंस के लिए जो ग्रांट दी गई थी उन्हें मना कर दिया. दे रेफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फ्रॉम द कंपनीज राइट टू ट्रेड. सो उसमें से जो बहुत बड़ा टैक्स रहता था वो उन्होंने उनसे मांगा. एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स. जो कॉइन्स वगैरह वो मिंट करते थे उसके लिए भी उन्हें वो राइट से भी मना कर दिया गया. एंड ऑल्सो स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस. जो आगे के रूलर्स नहीं कर पाए थे ये इन्होंने किया. जो फोर्टिफिकेशंस के लिए मना किया गया, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट. और इसी वजह से अक्यूजिंग, ऊपर से उन्होंने कंपनी के ऊपर जो इल्ज़ाम डाला, अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue. और कंपनी के इसी बर्ताव की वजह से, यही रिलेशंस, यही ट्रेडिंग की वजह से, बिकॉज दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, द बंगाल वॉज सफरिंग ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू. उन्हें बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा था रेवेन्यू का. एंड इवन अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब. सो जो नवाब की अथॉरिटी थे उससे भी वो लोग ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे थे. सो ये चीज़ें जो इनके लिए बिल्कुल मंजूर नहीं की गई. इट वॉज़ रेफ्यूजिंग, यानी कंपनी वॉज रेफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस. ऊपर से दे वर राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड इवन ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स. और उनके ऊपर भी कुछ बेतुके इल्ज़ाम लगाए गए. सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच हैव बीन टेकन टू द कंसिडरेशन. द कंपनी ऑन इट्स पार्ट. अब दूसरा हिस्सा, उस वक्त कंपनी क्या सोच रही थी, तो कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वेर रूइनिंग द ट्रेड. कि अनजस्ट डिमांड्स थी, ये सब जो वो मांग रहे थे वो अनजस्ट डिमांड्स थी, वो फुलफ़िल नहीं की जा सकती थी. और इसी वजह से EEIC का, यानी कि कंपनी का ट्रेड बर्बाद हो रहा था. एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. अगर कोई टैक्स नहीं लिए जाएंगे तो ही शायद ये ट्रेड आगे बढ़ सकता है. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड, ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए अल्टीमेटली सेटलमेंट्स बड़े करने पड़ेंगे. दे हैड टू एनलार्ज दी सेटलमेंट्स, दे हैड टू बाय अप द विलेजेस एंड रीबिल्ड द फोर्ट्स. सो देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, यानी अकॉर्डिंग टू EEIC. सो उनका जो मानना था वो पूरा नज़रिया यहाँ दिया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट द कन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली बिकेम वेरी इंटेंस. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड द बैटल ऑफ प्लासी. सो द कन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली culminated in the famous Battle of Plassey. So what happened during this time, how the Battle of Plassey took place, when the Battle of Plassey took place, that we will be summarizing by the next video. Till then, thank you, keep learning.